Income tax. Today's our topic is income tax. Okay. Definitions of income tax. की definitions होंदियां ने income tax दियां. ठीक है. Meaning of tax. Tax का मतलब की होंदा है. ठीक है. Tax is a compulsory payment made by the public to the government. ये एक compulsory payment है जो कि government ਨੂੰ देती जाती है public द्वारा. ठीक है. It is financial charge which is imposed on individual by the government. ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ. The collection from tax is source of income to the government. ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ. Then next is our agriculture income. Agriculture income ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? Section 2 subsection 1A. Agriculture income is fully exempted from tax under section 10 subsection 1 and hence any income received from as rent of land and income received from cultivator, any income received from any building which is situated in agriculture land and hence exempted from tax. आ सारी incomes जेडियां ने exempted होंदियां ने tax तो. ठीक है. Then the our next definition is assessee. Section 2 subsection 7. Assessee means any person by whom any tax or other amount is payable under this act. ठीक है, ये अपना assessee होता है. And ordinary assessee is a person against whom any processing are going on under this act. ठीक है. A deemed means मन्या हुआ is a person who is himself not responsible to pay tax but he is either responsible on somebody else, मतलब कि किसी होर ते रिस्पोंसिबल होंदा है किसी होर नू. ठीक है. फिर इदा एग्जाम्पल आंदा है डीम्ड असेसी दा. ठीक है. दैन एग्जाम्पल की है इदा गार्जियन ऑफ माइनर और अ एजेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट. दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव असेसी. ए वी नो रिप्रेजेंटेटिव मतलब दस देने असेसी नो. Next is our average rate. Section 2 subsection 10. Average rate of income tax means the rate arrived at by dividing the amount of total tax by the total income. Average rate equal to total tax by total income into 100. For example, ठीक है. Another example, if the tax was 5,000 and person income 3 lakh, okay, then put in like the figures all, then our answer comes. The answer is 1.666. okay. Then next is our maximum marginal rate. Section 2 subsection 29C. It means the rate of income tax applicable in relation to the highest slab limit in case of an individual AOP or BOI. AOP means association of person. Next is our block of assets. Section 2 subsection 11. It means a group of assets which are either tangible or intangible. Tangible means देखने वाले, intangible जो देख नहीं सकते. Tangible assets includes building, machinery, plant and furniture. Then our next is intangible assets. Include copyright, patent, trademark, license and technology. It means all those assets which same rate of depreciation is calculated is
known as block of assets. Okay, that's all for the intangible asset. Okay, then next is our child. Section 2 subsection 15a. Child is an individual, एक इंडिविजुअल, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स स्टेम चाइल्ड, ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड, एंड इट इंक्लूड्स बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है. ए हुंदा है चाइल्ड. ओके, देन नेक्स्ट चैरिटेबल पर्पस. सेक्शन 2 सबसेक्शन 15. चैरिटेबल पर्पस मीन्स help to the poor, medical relief, any help to the general public. If any activity carry trade, commerce or business and it is not charitable. जो पहले से वो चैरिटेबल हैं, जी इन्ना चाहती है ट्रेड वो चैरिटेबल नहीं है, ठीक है. दैन नेक्स्ट अपना होता है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स दैट वैल्यू विच यू गेंड बाय सैलिंग एसेट इन द ओपन मार्केट, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ओपन मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. दैट्स ऑल, ठीक है. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, subscribe and press the bell icon also. Like and